कार्तीकदामोदरस्तोत्रम्। सिन्धुदेशोद्भवो विप्रो नाम्ना सत्यव्रतः सुधीः विरक्त इन्द्रियार्थेभ्यः त्यक्त्वा पुत्रगृहादिकं वृन्दावने स्थितः कृष्ण मारराददिवानिशं निःस्वः सत्यव्रतो विप्रो निर्जने व्यग्रमानसः। कार्तिके पूजयामास प्रीत्या दामोदरं नृपा तृतीये निःसकृद्भुङ्क्ते पत्रं मूलं फलं तथा एवं भावसमायुक्तो भक्त्या तत्कथमानसः पूजयित्वा हरिं स्तौति प्रीत्या दामोदराभिधम्। सत्यव्रतं वाचा नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोधाभियोलुखले धावमानं परामृष्टमत्यं ततो दूतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं कनेत्रं मुहुःश्वासकं पत्रिरेखां ककण्ठं स्थितं नौमि दामोदरं भक्तवन्द्यम्। वरं देवदेहि समोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरे सादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुकाम्भोजमत्यन्तनीले वृतं कुन्तलै स्निग्धवक्त्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभैः नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं च रक्ष गृहाणे स मामज्ञमेवाक्षिदृश्यम्। कुबेरात्मजौ वृक्षमूर्ति च यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह। नमस्ते सुधाम्ने स्फुरद्दीप्तधाम्ने ततोरस्तविश्वस्य धाम्ने नमस्ते नमो राधिकायै त्वदीयप्रियाय नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। नारदं वाचा सत्यव्रतद्विजस्तोत्रं श्रुत्वा दामोदरो हरिः विद्युल्लीला चमत्कारो हृदये सनकैरभूत् इति श्रीमहापुराणे सत्यव्रतकृत श्रीदामोदरस्तोत्रं सम्पूर्णम्।